Hello student, today we'll discuss about what is the common point between acids and bases. This is the topic of 10th class chemistry lesson number 2, acid, base and salt. Okay, an important point here, this lecture. What do all acids and all bases in common? Means common क्या उनकी? First of all tell me, water does not conduct electricity. Okay, if we add some acid or base in that water, it will conduct electricity. Now when we add acid or base, what will happen in water? Okay, tell me. Now let's discuss. We know that acid give H positive ions in water. Okay, we know already last 3 lectures. And base gives OH negative ions in water when dissolved. From these 2 points we say that acid or base when we dissolve in water, then water conduct electricity. Means एसिड हो या बेस अगर आप पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो. देयरफॉर दैट इज द कॉमन पॉइंट. मीन्स कि उनको मिलाने से वाटर में कनेक्टिविटी होती है. ओके, conducting water, or finally we can say that tendency to conduct electric current is the common characteristics of all acids and bases when dissolved. मीन्स कि ये कॉमन पॉइंट है कि अगर आप कोई भी एसिड बेस को वाटर मिलाएंगे तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, वाटर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का. दैट इज द कॉमन पॉइंट. ओके, नाउ नेक्स्ट हियर, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशंस. ओके, we know that acid gives H positive, base gives OH negative. Finally we can say that substance can act as an acids and bases not due to presence of hydrogen atom and OH groups. Means H और OH, H atom और OH group के कारण हम पता लगता है कि एसिड है बेस है. बट when they dissolved in water they give hydrogen ion and hydroxyl ions aqueous solution. Okay, that show the sure condition of acids and bases. Substance act as bases only in water. In anhydrous means dry state. Anhydrous state their acid and basic character cannot be shown. Okay, only in hydrous condition. वाटर हैज़ ए स्पेसिफिक. अभी देखो जो हम उसको वाटर में एसिड को मिलाएंगे, बेस को मिलाएंगे, देन व्हाट विल हैपन, वी नाउ दैट वाटर हैज स्पेसिफिक रोल टू प्ले. एसिड गिव्स H पॉजिटिव आयंस, मीन्स पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 9th class, that is known cations. And what happen other anions. And base give OH negative, that negative ions means anion and cation. Means एसिड को वाटर में डाल तो ये बनेगा आपका H पॉजिटिव एंड anions. ओके, एंड बेस को OH negative anions and cations. Now dissociation, separation of ions from a substance known as dissociation. देखो dissociation जैसे आपका decomposition था फर्स्ट लेसन में, इस तरह आपका dissociation है. मीन्स वाटर टूट जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव. दैट प्रोसेस नोन है डिसोसिएशन, टूटना. नाउ डिल्यूशन ऑफ एसिड इन बेस सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू मीन डिल्यूशन मीन्स इफ यू मिक्स क्वांटिटी वाटर इन एनी सब्सटेंस दैट इज डिल्यूटेड. अगर आप दूध में पानी मिलाओगे तो दैट विल बी डिल्यूटेड, और उसमें ज़्यादा पीना दो दैट विल बी मोर डिल्यूटेड. मीन्स फॉर एग्जांपल इफ मिल्क रेट इज 60 रुपीज़ पर kg, दैट इज प्योर. More fats. If milk rate is 20 rupees per kg, means it have very less quantity fat, means कि pure नहीं है वो. Now dilution of acid and base solutions. Meaning of dilution: addition of water. With the addition of water, amount of acid or base per unit volume decreases. Means अगर आप पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, उसकी क्वांटिटी नॉर्मली कम हो जाएगी, पावर से कम हो जाएगी. एंड डिल्यूशन अकर्स दिस एक्सोथर्मिक. मीन्स डिल्यूशन एसिड और बेस का करो उसमें क्या होगा, एक्सोथर्मिक. नाउ व्हाट इज एक्सोथर्मिक? The process in which heat evolve. Okay, exo means exit, heat निकलेगी उससे. Sometime acid change into vapors atmosphere and polluted. कई बार क्या होता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग हो ना, अगर हम डिल्यूट करेंगे उसको तो क्या होगा, वेपर स्प्रेड होंगे उसके, मोर एक्सोथर्मिक होगा, और एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाते, फैल जाते हो, उससे हमारा पोल्यूशन होता है एटमॉस्फेयर में. Now precautions needed for dilution. Water into acid, dangerous and exothermic. तो क्या होगा, आप वाटर को एसिड में डालेंगे दैट विल बिकम्स
dangerous and exothermic, विस्फोट होगा. Okay, now what we do, we must add acid into water with constant stirring. पानी में हम एसिड को मिलाएंगे, constant stirring के साथ हिलाते रहेंगे हम उसको किसी रोड से. कंटेनर्स लेबल विद डेंजर साइन मीन्स दे कंटेन स्ट्रॉन्ग है. कई बार देखा होगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस है उनके डिब्बे पे, कंटेनर पे डेंजर साइन लगा होता है. दैट मीन दे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस. दे मस्ट बी हैंडल्ड विद केयर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आवर न्यूट्रलाइजेशन. Neutralizations. Here first, acid plus base, that is salt plus water. HCl, hydrochloric acid plus sodium hydroxide, that gives sodium chloride plus water. Okay, it means when acid and base reacts to form salt and water. Okay, जब acid और base react करेंगे तो क्या होगा, salt और water बनेगा आपका. Now why it is called neutralizations? Because this salt is neutral towards litmus, that is called neutralization, and it is always exothermic reactions. Now here I explain some more details about neutralizations. According to Arrhenius theory, Arrhenius scientist, acid gives H positive, base gives OH negative ions when dissolved in water. Now neutralization is the combination between H positive and OH negative to form H2O. Means जब आपके ये दोनों कंबाइन होंगे तो वाटर बनेगा. और न्यूट्रलाइजेशन में हमारी कंडीशन थी कि वाटर तो बनेगा ही बनेगा, दैट इज़ कंपलसरी. अब ये जो आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से ही बना है. हेयर HCl means H positive Cl negative plus NaOH Na positive plus OH negative, that gives Na plus Cl negative, NaCl plus water. Here that gives water. Now complete neutralization. If both acid and base are strong, both acid and base strong, that it is a complete neutralization. Here two examples are there. Now partial neutralization. Either the acid or base is weak, means दोनों में से कोई weak होगा, that is called partial neutralizations. Here weak acid, strong base, strong acid, weak base, that two examples of partial neutralizations. Okay students, in the next topic we will discuss remaining part of this chapter, that is salt. 4 salts are there. For learn this, stay with us, stay connected with us. Thanks, have a nice day.